So fine, according to your syllabus, cost is one of the topic which we are supposed to study. Okay, what is cost? Cost is nothing but the expenses. Okay, expenses that occurred during the process of the production. Okay, like take as a fixed cost, like अगर हम किसी को दुकान का या जमीन का रेंट पे करते हैं, that is fixed cost. फिर हमारा होता है वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम लेबर्स की सैलरी पे कर रहे हैं. इसके अलावा जनरली हम जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट. फाइन, सो दिस इज व्हाट इज द कॉस्ट एक्चुअली. So as per your syllabus, in your book, cost has been categorized, broadly into two parts. First is implicit cost. Okay, we'll see what is implicit cost. And second, what we have is explicit cost. Explicit cost. Fine, implicit and the explicit cost. So let's see one by one. यहाँ तक क्लियर हो रहा सबको? कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंसेस दैट अकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. फाइन, प्रोडक्शन को लेकर रॉ जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारा कॉस्ट होता है. ठीक है, कॉस्ट होता है. ठीक, it has generally two types. One is implicit, another is explicit cost. Clear this much? Okay, fine. Now see what is implicit cost. We'll start one by one. Okay, I clear this page first of all. Implicit cost. Implicit word itself defines internal. Okay, means when we involve, in a production function, when we involve generally our family members into, okay, we are not paying any wages or salary outside. Okay, instead of family members itself, such cost, okay, whatever the wages are occurred, the owner of the firm has alternate of his talent, like he implicit cost of labor. As an example, like I must say, just a second. Yes. Okay. Implicit cost is generally those costs, which already occurred. Okay. And it doesn't need to be reflected, doesn't need to be shown. Okay. Fine. Suppose taken as an example of any employer of your company. Okay. Who is good at, who's actually joined company as a software engineer. Fine. But he also has a talent of, accountings also. Okay, in that case, if that employer is also does some part of the activity or the work of the accounting, so we are already paying him for the work of the software, so we are not paying him anything for the accounting part. Okay, so even if we are paying something, like, we do not need to show this into our accounts. So this is what the implicit cost actually. And when it comes to explicit cost is simply, okay, whatever the employer or the labor what we have, we are paying them salary or the wages. Okay, salary or the wages. Such expenses are called cost, explicit cost of production. Understood everybody this much? The basic difference between implicit and the explicit? Yes, Say sir. yes if you understood. Yeah, fine. Okay, moving forward, now we have the actual
topic to be discussed. Okay, within the cost of production, we are going to study. First, we'll be studying about total fixed cost. Okay, then we study total variable cost. Okay, in this topic, when we talk about variable, you assume it as a raw material. Okay, assume it as a raw material, because in previous chapter, which is production function, when we talk about the variable, we have assumed there, what we have assumed there as a variable, Komalpreet? In production function, we have, excuse me, yes, Komalpreet, I don't know whether she's I speaking don't or know not. whether Somebody else could tell in previous chapter in the, yeah, Trisha. So labor. Labor, very good. Okay, so in previous chapter we assumed the variable cost as labor, but in this chapter when we talk about the variable cost of production, we are talking about the raw material. Okay, or the most of the inputs, we could say. Fine. To general understanding, we talk here as a raw material. It can be any input. Okay, not only raw material, it can be any input. Fine. So the expenses borne for this input is called total variable cost. Fine. Let's see forward. We'll start with the total fixed cost. Okay, you can write it as a total. You must have your copy, because after completing this topic, you have a clear understanding. So keep writing with me, total fixed cost. Okay, what do you mean by the total fixed cost? Total fixed cost is nothing but the cost, like production function, the cost that does not change, the cost that does not doesn't change with the change on output, with the change in output. Fine. So the cost that doesn't change with the change in the output. Okay, आपका output कुछ भी हो, आपकी cost जो है change नहीं होती है, that is called total fixed cost. Okay, so let's take it with example. We have a clear understanding about this. Okay, take example of a fixed land. Okay, which we have taken on lease. Okay, we have taken this land on lease, or must say rent. Okay, the rent is around 10,000 rupees per month. Okay, the rent is 10,000 rupees per month. Okay, fine. So in first month of production, we have produced 5 units. Okay, second month we have produced 10 units. So Geetika, please tell me, even if I'm producing 5 units or 10 units, is still the rent or the lease amount will remain same every month, yes or no? No, sir. Yes, sir. ठीक है. Production could be anything. It can be 5 unit, it can be 10 unit. Even if we talk about the third month, maybe हो सकता है कि कुछ लेबर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, ओके, या फिर काम पे नहीं आने की बात कर दी है, तो हो सकता है हमारा आउटपुट उस मंथ जीरो हो, 0 unit it can be. Still we have to pay the rent as 10,000 rupees, yes or no? Everybody. Sir. Yeah, No. so still we are paying. So this cost, it remain constant. It remain constant. It doesn't change. That's why the cost that doesn't change with the change in the output. यहाँ पर देखिए 5 यूनिट है, फिर 10 यूनिट है, यहाँ पर 0 यूनिट है. Change हो रहा आउटपुट में, but still the cost doesn't change. Okay.
So we call it as a total fixed cost. Okay, so let's make a, इतना लिख चुके सब कोई? रफ में लिख लीजिए इसको. Okay, so that you could have understanding. However, I'm recording this video. You can watch this video whenever you want later. It is saved in Teachment tab. Fine. So shall I move forward? Everybody say Yes, yes. sir. Fine. So this much we have understood. Okay, let's make a schedule. Okay, I make a schedule to make it easy for you. So still the rent of or the lease remain 10,000. Even if our output is 1, rent will remain as 10,000. Even the output is 2, rent will remain as 10,000. Output is 3, rent will remain 10,000. Output is 4, rent will remain as 10,000. आप ऐसा तो नहीं बोल सकते उस जमीन के मालिक से कि भाई साहब आउटपुट हमारा 0 हुआ है, हमारा कोई प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, तो हम आपको रेंट नहीं दे सकते. वो बोलेगा नहीं, रेंट तो देना पड़ेगा. रेंट वी कैन नॉट अवॉइड. ठीक है. सो ये आपका है शेड्यूल. नाउ टॉक अबाउट द मेकिंग ग्राफ बेस्ड ऑन दिस शेड्यूल. सो लेट्स, दिस इज y axis, this is x axis. We consider this axis as output. Output is our 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4 is our output. Okay. When talking about the TFC on y-axis, it is 10,000. Okay, which is costed. One output पे भी 10,000 है, second output पे भी 10,000 है, 3 output हुआ तो भी 10,000 है, 4 output हुआ तो भी 10,000 है. ये constant रहेगा. TFC. Fine. So you can see here output, even if the output may vary, the TFC or the total factor, total factor cost will remain same. So what we can say here, that total fixed cost is always, always parallel to the x axis. Fine. समझ में आया इतना? Everybody? Yes. Yeah, so you better make this diagram soon as faster. Okay, then we'll move forward to the TVC. अगर बन जाएगा तुरंत तो प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड से सर बन गया करके. Aisha, how's your health now? Sir. Not so good. Fine. This is not good outside, so please take care of your health. Okay, have some antibiotics, some Ayurvedic antibiotics we should go with every day. Okay, done with this, complete schedule and graph, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Okay, let's move forward. So this is all about the total factor cost. Okay, very gradually we move towards the total variable cost. Simple definition like product function, it is the cost that changes. It is the cost that changes with the change in output. Okay, आउटपुट में चेंज आएगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, चलिए देख लेते हैं सिंपल सेम एग्जांपल. पीस ऑफ लैंड जहां पर हमारा प्लांट सेटअप है, हम वहां पर प्रोडक्शन करते हैं. फर्स्ट मंथ हमने प्रोडक्शन किया था 5 यूनिट. ठीक है,
तो उस समय हमारा रॉ मटेरियल मान के चलिए लगा था 10, कोई भी अमाउंट हो सकता है, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, 10 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल हमने यूज किया था, ओके, एंड प्रोड्यूस द 5 यूनिट ऑफ द output. Okay, second month when we have 10 unit of production. So Trisha, tell me again, the same raw material will be used, or we have to increase the amount of raw material? So we have to increase the amount of raw material. Yes, we have to increase the amount of raw material because as per the definition output में change आ रहा है तो definitely raw material में भी change आएगा ही आएगा, ठीक है, fine. And third month when we have zero production due to strike, 0 unit of production. Now please tell me how much raw material we are going to use. Yes, Pragati. Miss Pragati Sahu. Okay, I cannot keep calling the names of people again and again, so we'll move forward. Okay, third month. Yes, you tell, Trisha. In third month, when we have 0 unit of production, how much raw material we will use? So we are not going to use any raw material because production is Yes, zero. is completely zero, so we are not going to use any raw material. Okay, so you can understand with the change in the output, the cost of the variable is also changes. Okay, so ये जो 10 दिख रहा है, 18 दिख रहा है या 0 दिख रहा है, ये रॉ मटेरियल जिसके पीछे हमने कुछ पैसे खर्च किए हैं, वो हमारा कॉस्ट है, ठीक है, वो भी है हर में, फाइन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, मेक ए शेड्यूल. इतना समझ में आ गया सबको? विल मूव फॉरवर्ड. The schedule will be like this: output versus total variable cost. Okay, output is like 1, 2, 3, 4 and 5. Fine. The total variable cost I write like जिस मंथ में आउटपुट 0 है तो टीवीसी क्या होगा, बता दीजिए फटाक से. जिस मंथ में आउटपुट 0 है तो हमारा टीवीसी क्या हो सकता है? Zero. Yes, very good, everybody. Okay, the month of production is 0. When the production is 0, the TVC would remain 0. Okay, but to produce 1 unit of output, we have used 10 unit of the TVC. Okay, or the cost. 3 unit के लिए we have spent around 18. 4 unit के लिए we have spent around 24. Okay, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर. यस, क्या मिस्टेक है बताइए फटाक से, So बताइए two क्या units मिस्टेक है. टू materials to यूनिट be. नहीं है, सेकंड यूनिट नहीं है, हमने डायरेक्ट 3 लिख दिया, ठीक है. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. फाइन. 2 unit के लिए we have spent around 18, then we have 24, let's take 34 and 50. Okay, इस शेड्यूल को आप लोग 1 सेकंड ऑब्जर्व करिए, ठीक है. जो टीवीसी का रेट है, इसमें मैंने कोई रैंडमली लिया है कि इसमें कोई पैटर्न दिखता है तुमको? जल्दी, यू हैव वन मिनट टू ऑब्जर्व. जो टीवीसी यूज हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये कोई रैंडम है या कोई इसमें कोई पैटर्न दिखता है आपको? So random. रैंडम है. एनीबडी एल्स? कोमलप्रीत, प्रगति, आयशा, गीतिका, किरण कुमार. किरण कुमार इज देयर? सो नाउ ही जस्ट कम एंड गो. भाविका सिंह. चलिए देखते हैं. When it was between 10 to 0 to 10, we have seen the growth of 10. Okay, increase of the 10. When it is between 10 to 18, the increase of 8. When it is between 18 to 24, increase is of 6. ठीक. फिर when it is between 24 to 34, it is 10. When it is between 34 to 50, it is 16. Now you can see the pattern.
यहाँ पर इंक्रीज तो हो रहा है, बट पहले 10 है, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर यहाँ पर देखिए आफ्टर अ पॉइंट 3 आउटपुट के बाद वी कैन सी कि फिर से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन you can see, when you observe, this pattern, that there is a variable cost which is increasing, output is also increasing, but the difference is like diminishing at the diminishing rate. Okay, तो ऐसे जब नीचे आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट। और यहाँ पर क्या हो रहा है बता दीजिए फटाक से। देन 10 के बाद 16 हो गया, तो कौन सा रेट हो गया कोमलप्रीत? Can you hear everybody? I don't know what happened suddenly. Yes. Yeah. So shall I move forward? Yes, sir. Yeah. So let's make the graph based on this. Okay. How your graph would be. Okay. So make the graph like this. This is your x-axis. This is your y-axis. Okay. It is 0. The output here. Okay. We have output here. Then we have TVC this side. Okay. So you output 1, output 2, output 3, output 4, and output 5. So output 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So as per the schedule, we have observed that up to the unit 3, up to unit 3, our curve is like this. It starts from 0. Okay. Up to unit 3, curve is like this. Okay. But at a point which is called at the third unit, we have observed that the rate of the TVC is on increasing rate. It is diminishing rate. ये जो रेट है देखिए थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आने की स्थिति में मुड़ जाता है, दैट इज डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो फ्रॉम द यूनिट 3 वी फाइंड दैट द रेट इज इंक्रीज्ड इन अ इंक्रीजिंग रेट। ओके, इट इज कॉल्ड टीवीसी। ओके, सो ये जो ग्राफ बना है आपका, ओके, यू कैन सी this type of shape is called inverted, okay, inverted S shape। ठीक है, inverted S shape, and the point from where the point from where the graph is changed its rate, okay, it from diminishing to increasing it has changed. This point is called point of inflection। Okay, not inflection, point of inflex। Okay, point of inflex। Understood this much everybody? This is how you can make the graph। So yes, if you have understood। Yes, sir. Yes, sir. Only Trisha is answering, I don't know why Yes, others sir. have mobile phone। Yeah, very good। Okay, now we have studied about the total fixed cost, now we have studied about the total variable cost। Okay, now we have to join both the things together and we'll find the total cost। Okay, so total cost is nothing, we write it as a TC, total cost is equals to total fixed cost plus total variable
कॉस्ट. ठीक है, total fixed cost plus total variable cost is equals to total cost. Okay, this is the general formula. Okay, so now let's make a schedule in order to understand how to find the total cost. We have total fixed cost, we have total variable cost, but दोनों को जोड़ के हम schedule कैसे बनाएंगे, उसका ग्राफ कैसे बनता है. ठीक है, तो देख लेते हैं. सबसे पहले वी हैव आउटपुट. ओके, लाइन खींच दीजिए. देन वी हैव टोटल फिक्स कॉस्ट, लाइन खींच दीजिए. देन वी हैव टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लाइन खींच दीजिए. देन वी हैव टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी. ओके, चलिए इसको बनाते जाना साथ में, सो दैट I need not to use number of pages. Okay, anyway we can use 100 a number of page n number of pages here, but still एक पेज पे रहेगा तो would be better for you. Output is starting from 0, then 1, then 2, then 3, 4, 5 and so on. ठीक, टोटल फिक्स कॉस्ट है, एग्ज्यूम कर लेते हैं इट इज 100 रुपीज. फाइन, रेंट है या कुछ भी है जो चेंज नहीं होगा. यूनिट आउटपुट 0 है तो भी 100, 1 है तो भी 100, 2 पे भी 100, 3 पे भी लाइक 100 एंड 100 अगेन 100. इट डजंट चेंज बिकॉज दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द आउटपुट. व्हेन इट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियस जीरो होगा यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो है इसलिए आउटपुट क्या हमारा जीरो है. वेरिएबल कॉस्ट हमारा 10 है, हमारा आउटपुट 1 था. वेरिएबल कॉस्ट हमारा 18 था, देन इट वाज 2 यूनिट ऑफ आउटपुट. देन वी हैव वेरिएबल कॉस्ट एज 24, तो 3 हो गया था. देन वी हैड 34 एंड 50. ओके, नाउ सिंपली यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना होगा प्रगति साहू, if you are Sir, actually 100. yeah, 100. Very good. And here यहाँ पर कितना Sir, होगा एक 100. यूनिट का. 110, 110. 110. Yes, in here we have 118, 124, 134 and 150. You find it out, still we have a different pattern observed here. देखिए, between 10 to 100 to 110 we can see there is a gap of the growth of the 10 units. Between 110 to 118 it is again 8. 18 to 24 it is 6. Then 24 to 34 it is 10, and 34 to 50 it is 16. Again these three things are increasing in the diminishing rate. Yes or no? Yes, Diminishing sir. rate. And here these two are, we can see it is on increasing rate. Fine. Increasing rate. So this is the schedule. Okay, if something comes into examination, like you have to prepare the schedule in such a way. Okay, you need to observe something that TVC should start from 0. You shouldn't mention any one there. Okay, fine. So let's move forward. Let's make a graph based on these factors. Okay, I'll use another page better. Okay, so we have graph like this. This is your x-axis. Here we have y-axis. This is your output, which is start from 1 unit of production, then 2, then 3, then 4, and last one is 5 unit of production. Okay, the total factor cost, which is let's consider 100 here. It will remain same. फर्स्ट ऑफ ऑल टीएफसी बना रहे हैं हम. ठीक है, पहले हम टीएफसी बना लेते हैं. तो एक यूनिट प्रोडक्शन पे हमारा टीएफसी कितना है, 100 है. ठीक है, 2 यूनिट प्रोडक्शन पे भी 100 है, 3 यूनिट पे भी 100, 4 पे 100, 5 पे 100. सो इट विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, टीएफसी बन गया. टीएफसी ठीक. अब हमको क्या बनाना है, तीन चीजें बनानी होती है. टीएफसी बन गया, अब टीवीसी और टीसी बचा. क्या क्या बच गया, टीवीसी एंड
TC, total variable cost and total cost. ठीक. So we'll start with the total variable cost. Total variable cost एक यूनिट पे देख लेते हैं. ठीक है, एक यूनिट पे 10 था. ठीक है, तो फिर 18 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर 34 हुआ, तो 3 यूनिट तक. ठीक है, 3 यूनिट प्रोडक्शन करते तक, 3 यूनिट के आउटपुट तक दिस कर्व वाज लाइक दिस. फाइन, अंडरस्टूड. टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं. उसके बाद ये कैसे हो गया, ये कुछ ऐसे चला गया. ठीक है, सो दिस वाज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक. स्टार्टिंग में it was on diminishing rate, then it was on increasing rate. Fine. Now टोटल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, टोटल कॉस्ट का फर्स्ट यूनिट कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा. ठीक है, हमेशा टीएफसी के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो टोटल फैक्टर कॉस्ट जहां से स्टार्ट होता है विच इज अराउंड 100. ठीक है, वहीं से आपका टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगा एंड इट इज पैरेलल टू द टीवीसी. ओके, कि ये पैरेलल होता है. ओके, तो जैसा टीवीसी का ग्राफ होगा, सेम ग्राफ किसका बनेगा, आपका टोटल कॉस्ट का भी सेम ग्राफ बनेगा. तो इसका एक पैरेलल ग्राफ बना लेते हैं विच इज़ वेरी सिंपल. ओके, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर बिकॉज टोटल कॉस्ट हमारा 100 से स्टार्ट हो रहा है, नॉट फ्रॉम द जीरो. यहाँ पर जीरो है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बट टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 100. So it is also goes in this rate. Okay, then it will move like this. Okay, it also makes a S curve shape. Fine. So so this is about the TC, TVC, TFC. Okay, this gap, the gap between uh, TC and TVC, you would realize that this gap is always 100. The gap is always 100. ठीक है, बिकॉज हमारा टीएफसी क्या है, कांस्टेंट है, द गैप इज ऑलवेज 100. ओके, सो कुछ ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक कि एट जीरो प्रोडक्शन या जीरो आउटपुट टीसी इज इक्वल्स टू, ओके, टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी. ठीक है, टीसी देखिए यहाँ पर इसके इक्वल है जीरो प्रोडक्शन पे भी. ठीक है, देख लीजिए, आप शेड्यूल देख लीजिए, आउटपुट कितना हमारा जीरो है, टीएफसी कितना है 100 है, और टीसी कितना है 100 है. फाइन, और टीसी इज ऑल्सो इक्वल टू द इन्वर्टेड एस शेप. ओके, inverted S shape. Okay, take the screenshot or write it down as of now.